webinar. It's about basics of chiropractic. I'm still a learner in chiropractic. I have no expertise, let me tell you honestly. But I'm talking about the basics of chiropractic, which I have learned with my experience. I won't be teaching much of the techniques because it needs, a lot of practice and expertise to teach. And this is something which a student or a practitioner should not learn by watching videos. So why I'm here? Because I don't want you to learn from YouTube. To just create this awareness, I'm here talking about the basics of chiropractic. So let me give you a review what all I'll be teaching or discussing. See, techniques, so you can learn from the masters and you can learn from YouTube. But there are few things which you are not going to learn in any workshop, or you won't be able to spend too much time in a workshop for hands-on for this thing, which I am going to discuss with you today. Basically, these are like why chiropractic is emerging in physiotherapy, why it's becoming so popular, and what should be the body language of a therapist. Even a short stature, thin limb therapist is there, and if you want to be, conveyed, if you want to be conveyed in a very convincing way that yes, I can crack you. So this confidence you want to gain from the patient. So how your body language should be, how your clothing should be, and what all setups it needs for chiropractic practice, and the basic palpation and basic assessment. It's more of palpation. I'm not telling you any specific assessment, and few do's and don'ts other than chiropractic, what all need to be taken care while cracking. And then we'll check the condition of the vertebra and correlating with the patient's complaint, and more focusing on the vector of the force, and how to drop your body weight while cracking, and few considerations are there. Coming to the techniques, I'll be telling you again, I'm telling you I'm no expertise in that, but yeah, I'll be, because all the students, mostly the students are there, I think, in this workshop. So yeah, so I'll be telling you, discussing, showcasing, demonstrating few techniques, few very generalized techniques which are very non-specific. I'm not going to tell you very specific techniques. In thoracic, what all need to be taken care, and few techniques of thoracic and pelvis, and we'll focus more on palpation thing. All right. So this was the pro forma how I'm going to go ahead. So let's start. Why chiropractic? Why you all are here? Why you spending 1 hour in this webinar with a learner herself? So the thing is, why chiropractic is emerging so fast and becoming so popular that patients themselves come and ask, do you do chiropractic? Are you certified? Do you crack my back? Can you crack my back like that? We to get n number of calls, all are like सब YouTube में देख के they call and they say chiropractic होता है क्या आपके यहाँ? So we get n number of calls. People who don't know what is chiropractic, they come and get their back cracked. So first thing is, this cracking sound is very fascinating, I guess. Everybody wants to listen those sounds, and that gives a great relief to them. So it's becoming so popular because
you know, why we visit physiotherapists as physiotherapists, we should upgrade ourselves, because you know, we don't want to see patients repeatedly. We want to give them, अभी कोई 15 days का session कोई नहीं आता है, 7 days का session कोई नहीं आता है, and even if we asking them to come for 6 sessions, 7 sessions or 10 sessions, it's like into breaks. No, nobody has time. So what I mean to say, chiropractic has concise the treatment, our sessions, our number of sessions वो भी कम हो जाता है, and the amount you spent on the patient by doing grade 4 mobilization वो भी कम हो जाता है. तो your effort and patient's time, so the duration of the session and the number of session decreases, and it's gaining popularity. तो patient खुद ढूंढ के आते हैं कि do you crack, ये बोल के भी आते हैं, and then we should always have this skill कि we are blessed that chiropractic is more for physiotherapists, you know. These days so many MBBS and dentists they are doing this course, or but I think the palpation का जो skill physios के पास है ना, वो किसी और के पास नहीं है. तो there should be always add on to our skills, and chiropractic is a wonderful tool. But I tell you, don't jump on the patient, please. आपको अगर बैक क्रैक करना आता है तो इट्स नॉट लाइक कि पेशेंट आया है इसको तो मैं क्रैक करके ही छोड़ूंगा. वो कायरो के लिए नहीं भी आया है तो यू आर लाइक नहीं, आई एम गोइंग टू जंप ऑन हिम, आई एम गोइंग टू क्रैक हिम, आई एम गोइंग टू गिव दैट साउंड टू हिम. तो प्लीज डोंट जंप ऑन द पेशेंट टू शो योर स्किल. पहले आप ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल उनको बताइए, दे आर कन्विंस्ड टू get their back cracked, then only do, because there are lots of red flags to it. So this is a very generalized thing ki why we should upgrade, why chiropractic. It's because the consumers, jo clients hai, jo patients hai, they themselves ask. So we should upgrade our skill, and then number of sessions and duration of session ye bhi maine baat kar li hai. So this is why we are here, to learn the thing ki why we should learn chiropractic, And then the next thing is therapist ka body language. Guys, please, I know it is not going to interest you, but I want to emphasize on this. Being a physio only, why chiro? Being a physio only, be properly dressed, and I'm not saying being western only. Whatever you're wearing, very modest wearing, and your neckline not falling or too tight clothing. Male therapists लोग को मैं देखती हूँ, they are in too much of formal tie and all, and belt and all, and too much of restrictive clothes. And then girls, they female therapists are like, they leave their hairs open. So please take care of your clothing and hairs and your body language and everything when you're dealing with patients, when you are at workplace. This is something which I speak when I interact with students. मैंने बहुत बार इस बारे में बात की है, and people invite me to talk about this only. तो please take care of your clothing. ऐसा नहीं बहुत casual low neck आप पहन के patient को treat कर रहे हैं, या बहुत ज्वेलरी पहने हैं, मतलब बड़े रिंग्स पहने हैं, या रेस्ट्रिक्टिव कुछ, या यू वेयरिंग चेन एंड इट्स फॉलिंग ऑफ ऑन योर फेस एंड पेशेंट का फेस, और इवन इफ योर हेयर इज शॉर्ट, how it looks, right? Just imagine, suppose I have to got long hairs, otherwise also if you have short hairs, how you treat like this? Please come on. So guys, please be modest with your clothing, and it's difficult to define what is modest, but be professional attire. I want to share one thing with you. Recently happened, somebody hosted a webinar, and I was a speaker in that, and there was series of webinar, e-conference kind of. So there was this girl who was assisting a
foreigner. I don't know she was from which place and all. I don't want to talk about that. But she was with a very popular chiropractic of that country. She was assisting him, and okay, she was wearing collar neck and rest everything fine, but her hairs were open. Though she had short hairs, but it was open. Does it look good? Your hairs falling on your face or patient your face and you treating them, it really doesn't look good. So be it's not for chiro only, it's for physio. I'm telling, I got this platform, so let me share this thing with you. I feel sad when I see such people with big nails and big this rings and tight clothing, restrictive clothing. I'm not talking only about females, and even with male they are in too much of formal. मतलब आप लूज क्लॉथिंग नहीं तो कम से कम कंफर्टेबल क्लॉथिंग में रहिए. ऑलराइट, so this was about the body language and clothing and hairs, how you should carry when you are a therapist or a chiropractic. Then let's come to little practical thing, the body reading or assessment or functional assessment. Guys, I don't know you're from first year or second year or final year or pass out or practitioner or clinician. So this is a very vague thing. I'm not going to share very specific things, very specific test or something. वर्टिब्रल आर्टरी का कोई टेस्ट है या कुछ भी मैं ऐसा बहुत स्पेसिफिक नहीं बताने वाली हूँ, बिकॉज my job is not to create quacks, so I'll play very safe. All right, so moving on, let's talk about body reading. When a patient comes to you, patient with physios, what happens, patients आते हैं और बोलते हैं ये मेरा MRI है, ये मेरा X-ray है, and we start seeing the X-ray and MRI. और X-ray MRI की फिल्म नहीं, हम रिपोर्ट देखते हैं. I personally never do. My gurus, my mentors have not taught me this. They say कि रिपोर्ट नहीं, आप कंप्लेन बताइए पहले. तो I ask my patient कि आपकी कंप्लेन, रिपोर्ट में देखूंगी आपकी कंप्लेन क्या है. First I ask them कि when it started, how it started, aggravating factor, चलके में है, रेस्टिंग में भी है, सीढ़ी चढ़ने में है, whatever. ठीक है, जो हम फिजियो में जो भी नॉर्मल क्वेश्चंस पूछते हैं, without touching, ये सब चीजें हो गई. Then you see the film. You should have this knowledge of reading the X-ray, at least basic common X-rays of knee, back, the whole spine and ankle and everything. So X-ray ki film, not the report. And these days, for guys, I just don't see the reports. There is a set of things this radiologist, there is a set of things these people सीधे छाप के भेज देते हैं. पैरास्पाइनल मसल स्पैज़म, दैट्स इट. अगर आप बैक का एक्सरे दिखाएंगे, स्ट्रेटनिंग ऑफ लॉर्डेसिस, पैरास्पाइनल मसल स्पैज़म, हो गया इनका काम. ये प्री सेट चीजें वो टाइप करके भेज देते हैं. यू हैव टू सी कि अभी तो रिसेंटली आई हैड अ पेशेंट 2 years से वेलोर एंड हैदराबाद एंड एवरीवेयर शी हैज विजिटेड. Nobody diagnosed such big unilateral cervical vertebra. ऐसा भी नहीं कि उसका ट्रांसवर्स प्रोसेस बढ़ा हुआ था. Big cervical vertebra, extra vertebra था, और it was undiagnosed. For 2 years, this was the third X-ray. It was undiagnosed. So please, आप उनकी कंप्लेन पहले सुनिए, टच करने से पहले. I told you don't jump on the patient. पहले उनकी कंप्लेन सुनिए. आधी पिक्चर तो आप तभी बना लेंगे, and then see the X-ray, MRI, and I prefer seeing X-ray even if in the disc bulge cases. That's how I learned from my guru. And see the film, and then for their satisfaction, see the report also, and then touch the patient. फिर वो मेरे सामने के चेयर से उठ के मेरे बाजू के चेयर में उसके बाद आते हैं, and then I do my palpation. Resting में attitude of the limb and all, and then हम जरूर से उनको. So I was talking to you about body language. तो डायनामिक भी हम assess ही करते हैं. How is she walking? Is she limping? Where is the restriction? Where is the key lesion? Just visual body reading हम पहले करते हैं. So I would ask my model today for body reading. So I could manage this much only
to be my model. So I don't have any adult model. She's my daughter Navya. She's 10 years old. Series of webinars I have done, and she always been a very cooperative cameraman and model. Thank you. So the body language, I prefer seeing from the front. Akshita, is she visible? Yes, Both ma'am, are she is. visible. Okay. So first thing we see is the symmetry. I think we should go a little back. Your faces are not visible. Yeah, still, I think manageable. Alright, I'll Yeah. come closer. So first I see the symmetry. Like she's so conscious, otherwise I don't know. But ठीक है, she's scared तो इतना कोई वो नहीं है. थोड़ा इसका भी shoulder is, you know, elevated. So because of thanks to lockdown, जो इनका screen time बढ़ा है अभी, तो she's giving me that look, हाँ. So the thing is, इसका trapezius spasm में है, yes, थोड़ा सा elevated लग रहा है, and दोनों साइड हम कुछ देखते हैं या फिर एक साइड का कुछ देखते हैं, like symmetry. तो एक visual look में first you see the symmetry कि one is down or up or one is rotated, not too much like rounded shoulder, or the distance of the ear and shoulder is same or not, like this kind of thing. And nipple line, the umbilicus and ASIS you can see. आप ASIS भी जरूर से हमेशा चेक किया कीजिए. Like the ASIS, it should not be up or down like this or rotated like this. So with just a visual assessment or slight palpation you can see. And then the alignment of the knee, ankle, pronation, overpronated kind of thing, or varus valgus, hyper extension of the knee, all these things. Okay, and then this you can do with plumb line also. I've stopped using plumb line, otherwise I used to use a lot. And then side line में the alignment of ear with the center of the joint and shoulder joint and your pelvis and back of the knee and everything. So एक line में ये सब चीजें हैं कि नहीं, जो एक normal plumb line में जैसा हम देखते हैं, तो body line it's like this. The hands are falling in front with internal rotation, or it's normally it's like anatomically जैसा हमको सिखाया जाता है कि ideally it should be like this. Hers is going like this because she is developing this posture. Okay, hers is going like this. It should be like this. And those who are very open personality, they are like this. Okay, so normally it should be like this, not like this. So check the symmetry and in the sideline how it is falling. You can check the pelvis का. It's lordotic है, sway है, neutral में है, जो भी altitude of pelvis है. Sideline में mostly हम shoulder and pelvis को ही देखते हैं, and then knee also. तो pelvis is very important. Pelvis का orientation is very important. ये आपने visually देख लिया. And then we start with functional thing. We'll ask the patient to walk. Then you have to see कि one leg अगर वो walk कर रहा है, I can't show you the full thing, but still I'll try. अगर patient walk कर रहा है तो पैर ऐसे लाके walk कर रहा है and then taking step, or every time it's going, one leg is going into pronation or internal rotation ऐसे करके आ रहा है, तो see the walking pattern, or pelvis is drop, या उसको कोई gluteal amnesia तो नहीं है कि एक pelvis you feel कि working and other glutes not working. तो एक visual जैसे जैसे आप expertise होंगे, you get to know कि सिर्फ walking नहीं देखिए, you can make out कि where is the restriction. All the body parts are moving, maybe in a wrong way, in a wrong form, but there will be some restriction. You'll get to know कि वो knee से आ रहा है, pelvis से आ रहा है. Mostly, with my experience, it's mostly the pelvis, your glutes or something, your QL ऐसा. तो just see कि वो key lesion क्या है, primary fracture क्या होता है, main जो subluxation है
वो कहाँ पे होगा, देन सेकेंडरी चेंजेस आ रहे होंगे. तो you get to develop those eyes, you know, that what I'm saying is train your eyes visual उसके लिए, then move to palpation. तो एक आपने स्टैटिक किया एंड देन वॉक करा के देखे, फिर उनकी कंप्लेन से रिलेटेड जो भी चीजें, लाइक इफ द पर्सन इज टेलिंग अबाउट लंबर पेन, तो आप एक असेसमेंट कर लो. प्लीज कम हियर, सिट. आई जस्ट चेक, कम बैक, आराम से बैठो, दोनों ऊपर टच में. यस, प्लेस योर फुट प्रॉपर्ली. या so I check I start checking with the PSIS. मैं barely उनके PSIS जो 2 डिम्पल हैं, इसके 2 डिम्पल हम चेक करेंगे. डिम्पल में ये हो सकता है कि what could be the finding, 2 dimples, ठीक है. दिस इज L4 का रीजन बोलते हैं. ये आपके अगर SI जॉइंट का और ऊपर का पार्ट है, ठीक है, so just above the SI joint. So this is her crest, this is the PSIS. Chiropractic में this is very very important. PSIS visually आप देखेंगे तो दोनों की डेप्थ सेम होनी चाहिए, you know, same amount of depth should be there. And अगर आप palpation करेंगे तो it should not be up, one should not be up and down, और लाइक सिफेलिक कॉर्डल एक बार चेक कर लीजिए एंड एंटीरियर पोस्टीरियर चेक कर लीजिए. तो जस्ट डोंट ग्रैब इट टू मच, एक हल्का सा टच कीजिए एंड जस्ट सी योर थंब इज गोइंग अप और डाउन और एंटीरियर और पोस्टीरियर, लाइक ऐसे में, आगे पीछे तो नहीं है. सो जस्ट चेक योर PSIs एंड दिस आई चेक व्हाइल द पेशेंट इज लाइंग डाउन. एक बहुत हल्के हाथ से, यू रियली हैव टू ट्रेन योर पाल्पेशन स्किल. एक हल्के हाथ से स्पाइनस प्रोसेस के ऊपर आप पाल्पेट करके देखिए. यू रियली डोंट नीड टू पोक अ लॉट, बहुत ज्यादा पोकिंग की जरूरत नहीं है. बट या डेवलपिंग दिस स्किल विल टेक टाइम, विल टेक, यू नीड प्रैक्टिस. ये बस आप हल्के हाथ से छूते आइए. बेसिकली सिटी जंक्शन के बाद अगर थोरेसिक में आप हैं तो यू विल फील मोर काइफोटिक, या फिर कोई एक वर्टिब्रा अराउंड T4 एंड ऑल, कोई एक वर्टिब्रा थोड़ी सी आपको पीछे मिलेगी, मोर प्रोमिनेंट पोस्टीरियर टाइप्स, ठीक है. सो आप ऐसे करके पाल्पेट करते आइए एंड देन चेक विद द लंबर लॉर्डोसिस, द नॉर्मल काइफोसिस एंड योर सर्वाइकल थिन, ठीक है. तो ये पाल्पेशन में चेक कीजिए. When she lie down, again I'll repeat this because palpation skill is what I'm going to talk today. All right. So I'll tell you because I'm talking to you about basics of chiropractic. So I'll talk about checking the leg length also. See, I'm not sure how visible it will be and how clear view I could give. But let's try. Get up. Our palpation was what I was telling. My this model is not very flexible, but still I try. If the patient is lying prone, spinous process में बस आप हाथ फेरते आइए और कोई एक वर्टिब्रा आपको पीछे या अंदर मिलेगी, या तो anteriorly shifted या posteriorly shifted मिलेगी. So there is the locking. Okay. You need to focus on that vertebra. And नीचे आते जाइए. So this is one, and the other thing is suppose this is lying down. Palpation में spinous process को with these 2 fingers fit the spinous process. Fit the spinous process here. Okay, between the 2 fingers. So आप इसको ऐसे 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 चेक करते भी आएंगे. Again I'll show you on the model. So ये आप ऐसे ऐसे चेक करते आइए प्रोन में एंड जस्ट विजुअलाइज कि आप जब पाल्पेशन ऐसे स्पाइनस प्रोसेस के अराउंड करते आ रहे हैं तो इट्स कमिंग स्ट्रेट और वन वर्टिब्रा सडनली गोइंग लाइक दिस और दिस, लाइक वो स्ट्रेट आ रहा है, सडनली इट्स गोइंग लाइक दिस और दिस. सो देयर इज टिल्ट, more likely to have a bulge at that segment. You getting me?
अगर ये वर्टिब्रा है तो ये सेम ऐसे आते जा रहा है, कहीं पे ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, तो दिस इज द टिल्ट एंड फ्रॉम द अदर साइड देयर इज चांसेस ऑफ डिस्क bulge. All right, yeah. So I won't be able to read the comments and all because it will be disruptive. I'll do All that right, for you. yeah. So this is it. So I'll tell you about the palpation one more time. It's half an hour now. Let's move to this thing, leg length check, which is very basic of chiropractic. First thing a chiropractic touch the patient is when they do the leg length check. Okay. One more thing, assessment में आप उनको थोड़ा सा मूवमेंट, लाइक हमने फंक्शनल किया, हम उनको वॉक करा के देखे, बॉडी रीडिंग एंड ऑल. So one more thing is like अगर लंबर में है तो what you can do, hold the transverse process, or with PSIS what you can do, the Gillette test, which is very important. आप ये करिए, ये पकड़े, and now you move your right knee towards your chest and move your left knee. Your core is weak, you're taking too much help from other muscles. So she is daughter of Pilates instructor. Can you imagine? So the thing is, so when she raised, come on, get her. I was checking her PSIS. I asked her to raise one leg and then the other leg like this. So what's happening? आपने PSIS में थोड़ा फर्मली हाथ रखा, उसने जब राइट लेग मूव किया तो राइट हैंड विल गो अप एंड सॉरी इट विल गो डाउन. PSIS ऐसे pelvis will go down और ये हुआ, suppose this and this and this. All right. So it's going down and down. अगर there is any restriction तो वो डाउन नहीं आएगा. One side will come down, the other side won't come down. And then you can do इसकी ओपनिंग भी करा के देख लीजिए कि how PSIS in flare out flare जैसा एक्टिविटी करेंगे तो how it is working. तो this much is enough to get an idea कि where is the restriction in lumbar or pelvis. Now I'm worried about the leg length. Let me try. Wait. We need to shift this couch. Yeah, I can put them up. I asked my patient to take out the footwear. Ask the patient to relax. Relax. Just give up. No contraction here. Okay. Now the thing is, you have to mark your either index finger or middle finger. I'm habitual of marking the center of the index finger. See this. Okay. So mark your finger and you have to slip your hands medial malleolus की तरफ, ऐसे आके slip करके medial malleolus के just नीचे stop होना है. So it will be like, shall I remove? Thank you. Where is it? Okay. So what you have to do? Am I visible, Akshita? Yeah. So slip your hands and bring it towards the medial malleolus. ऐसे करके आए और medial malleolus जैसे ही end up होता है उसके नीचे इसको fit कर लीजिए. Your hands. Okay. So do it like this. And use your dominant eye. Like mine is right. So I close my left and view this with right eye. So you have to be over the patient's leg. ये आपने ऐसे किया. Alright. So I see कि ये जो मेरा हैंड है, ये जो लाइन है, it's going up down क्या? So the one which is towards the body, ये मेरा कोई हैंड अगर towards the body है, तो this is the short leg. अगर ये वाला towards the body है, ये वाला लंबा है, तो medial malleolus is ending up
little up. So this is the short leg and this is the long leg. So our treatment will start with this. The whole assessment will start with this. PSIS किया, फिर हम median malleolus पे आए और malleolus we checked and then we'll assume that this is the PI leg, postero inferior, मतलब ये जो pelvis है it has come posterior, तभी इसका PSIS ऊपर है, ये ऐसे आया है. Alright, so इसका pelvis ऐसे आया है. Even if you see my daughter, this particular model, this hip is up. Can you see? Can you appreciate? This hip is up, this is down. If I do like this, if I keep a scale, this hip is up. So it's like this. I'm exaggerating, it's like this. So the PI leg is this. Okay, then there are combinations like PI के साथ EX and IN. I'm not getting into it. What I want to tell you, the shorter leg. तो हमेशा देख, there is a rule in chiropractic. क्या होता है कि if this pelvis has gone like this, तो other will go like this, opposite. ठीक है, अगर ये pelvis अगर ये पीछे आया है तो other one will go like this. So AS, IS and PI and AS, and antero superior and postero inferior, this will be termed like this, the shorter leg PI. And then you can check from here. AS, IS के पास में you have to put hand where you getting more space. There may be equal space, PI और AS होने के बाद भी there may be equal space. But in this particular case, इसका PI and अगर हम इसका rotation देखेंगे तो this hip is up, so it has rotated like this. So if I put my hand and if I try to check, there is more space here and there is lesser space here. So you getting my point? Its pelvis is like this, so I'm getting more space here. तो जो उसका ASIS है, उसका ASIS है this part, so the ASIS is up because the pelvis has come like this. Suppose this is the ASIS, so it has come up, so there is more space here. All right. I was talking to you about the palpation of the spine. Get up. You need to turn the bed again. Yeah. Let's come closer. Yeah. Lie down. So one more time I want to tell you about the palpation. Just a feather touch kind of palpation. See, she has beautiful kyphosis and lumbar lordosis. And here you can check the sacrum position also. Nutation or counter nutation. Alright, nutation, the anterior thing, the base of sacrum anterior, or counter nutation, posterior or neutral. Alright. So she has a wonderful curve, and just by palpating the spinous process of all her vertebra, I didn't get any bump or any pit. कोई भी वर्टिब्रा आगे या पीछे नहीं आई है, ठीक है? So it's like this, and the curve is not too much here. There is no too much of lordosis or too much of kyphosis. ठीक है, तो ये हमने ऐसे चेक कर लिया. And then the spinous process, this 2 finger one, fit the spinous process between this and just check. So all the spinous process, it's coming straight. It's not like this. Okay, so there is no tilt. And we have already checked the PSIS. All right. I think, yeah, this is it. Yes. What else? This was the palpation. I think we should move to some because students are very curious for
techniques. So we should start with the technique, and time is running out. Yes, it's 8:40. So I'll tell you a few techniques. Again, I'll ask you to please don't jump on the patient to do the techniques you have practiced before. Get me one question. And before learning this technique, you need to practice two things. One is palpation and one is manipulation. Manipulation without a live body. How are you going to do that? You know, first you need to practice the thrust. What is thrust? What is manipulation? Thank you. High velocity, low amplitude. Exactly, literally high velocity, low amplitude. How is it? Manipulation is the fifth grade manipulation is this only. है ना? So by definition, it's high velocity. The speed is too high. We are not doing any mobilization like this. बहुत guarded, controlled mobilization नहीं कर रहे हैं. We doing this. Like the velocity is very high, but the amplitude. What about the amplitude? कहाँ these physios fail to be a good chiropractor? Low amplitude में. Why? Take a cushion before jumping on the patient, please. So this I have got for you only. I am going to teach the techniques. Before teaching on the model, I'll teach you all this, and I want you to spend another 5-10 days learning with this cushion. Okay? So literally meaning high velocity but low amplitude. अब low amplitude में physiological limit तक जाएगा कैसे? So engaging the barrier. What does it mean? It's high velocity. So first you need to practice this and then dropping the body. Okay? First learn to take care of your back and your shoulders. You need a lot of shoulder movements and back thing. So please love yourself. This is your bread and butter. Please take care of your shoulders, hands, wrist and back. Please. When you practicing HPLA, you really need to take care of your posture, your shoulder, wrist, fingers and back. Okay? So always ऐसे बिल्कुल ऐसे नहीं खड़े जाओ कि you taking too much effort. Take a lunge position, be relaxed, spine neutral, and practice this with me with the cushion. Okay? So first practice with your hands. तभी आपको difference पता चलेगा. Practice with your hands. This high velocity. It's not mobilization. It's high velocity. All right? And then learn engaging the barrier. Like हम physiological limit में ही रहते हैं, but end range तक जाते हैं, and then we go थोड़ा सा आगे. This is manipulation. This is HPLA. ये हम joint line के कैप्सूल को पूरा stretch करते हैं, थोड़ा सा आगे जाते हैं, तभी वो crack होता है. I forgot to tell you about the cavitation, the cracking sound. मैं बताते साथ में बोलूँगी because we are really running out of time. So this is high velocity. आप try करो with your biceps, and then to know the difference, you have to learn this with chiropractic. तो आपको बहुत दूर नहीं रहना है. Be जहाँ पे आपको काम करना है, be closer to it and learn to drop the body. Drop the body weight. So everything is settled, stiff. Okay, your elbow and wrist. और आप तो spinous process में हैं, समझिए. You are on spinous process. अगर आप thoracic में हैं, you are not on ribs. Okay. So you doing this. Practice with me with cushion. Okay. So you doing this and then. So I'm not talking about ये सब practice कीजिए. I'm not talking about the here with these two things. I didn't talk about the amplitude. Now we'll talk about the amplitude. This was the high velocity body dropping thing. This body dropping. ठीक है? And then engaging the barrier. Let me be very close. Akshita, the cushion is visible? Yes, ma'am. Yeah.
So guys, look at the cushion. Okay, look at the cushion. This is, I'm going like 80% I have gone inside the cushion gently. मतलब आप उसके एंड रेंज तक चले गए, कैप्सूल को स्ट्रेच करिए, जॉइंट कैप्सूल को, ठीक है, एंड ऑल द लिगामेंट्स देयर. ये इसको बोलते हैं एंगेजिंग द बैरियर. एंड देन ड्रॉप द बॉडी, ड्रॉप द बॉडी, सडनली ड्रॉप द बॉडी, मतलब धीरे धीरे नहीं. सो हाई वेलोसिटी, लो एम्पलीट्यूड. तो engage the barrier and then high velocity, low amplitude, drop the body. Okay, so please practice this with if this is the first time you'll be practicing for chiropractic, please practice it with the cushion. This is the only thing I think this is the takeaway from my webinar on basics of chiropractic. First practice this with the cushion. The same thing, you have to take a very small cushion and you have to practice rotational thing. How to control, अगर आप cervical में हैं, तो how to control the rotation. यहाँ पे कोई body drop नहीं है, more of your biceps, but learn to like wait. Yeah, I was talking about cavitation, the pop sound, this bam bam, ये जो sound आता है, what is this? पेशेंट पूछते भी है ना कि कुछ टूट गया क्या, तोड़ फोड़ कर दिए क्या. सो आप जो सो व्हाट इज दिस? कैविटेशन इज एक्चुअली in every soft tissue of the body, even in blood, lymph, there are gases, especially in our synovial fluid. Synovial जो हमारा मेम्ब्रेन है उसके अंदर, सभी joints के अंदर, synovial membrane के अंदर there are few gases. And when we, now I need water, and when we do this sudden jerky thing, when we manipulate my Patiala glass. I bring water like this only. Thank you. So cavitation is when we compress the synovial fluid surrounding, there are few gases which comes out from synovial membrane, और कोई synovial folds फंसे हुए रहते हैं, तो वहां से gases लीक होते हैं, तो that is cavitation. Which gas I don't know, maybe nitrous oxide. Yeah, so that's why we get this cracking sound. अच्छा, we practice the high velocity, low amplitude with the cushion, and then yes, yeah. Yes, this is gas. The cavitation is the release of the gas. And with some rounded thing, what you do, क्योंकि whenever we do, especially the lumbar and cervical manipulation ना, thoracic में बहुत ऐसा कुछ, there is no traction thing, engaging the barrier is everywhere, and you need lot of clarity, complete knowledge of the orientation of the facets. When you are on spine, when you are working with the spine, even with the other joints, अगर आप शोल्डर में हैं तो कौन से मूवमेंट में इट्स गोइंग लाइक दिस एंड देन स्लाइडिंग, ग्लाइड, स्लाइड, रोल, जितनी चीजें होते हैं ना, यू शुड बी वेरी थॉरो विथ ऑल द दिस मोबिलाइजेशन थिंग. तो वी आर लर्निंग द सर्वाइकल थ्रस्ट. आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू एनी सर्वाइकल थ्रस्ट, नो टेक्निक्स. thoracic and lumbar I'll tell you that is sorry. So the thing is, you have to learn this movement. Okay, so what you'll do is take some rounded thing and feel like a lot of, you pulling the head and neck out of their body. It's kind of gentle, good gentle traction. आप feel कीजिए, good gentle traction, and take it on lateral flexion, rotation, and then. So you have to practice this. Sorry, you have to practice this. Okay. And be always easy. Like अगर आपको corners में जाके इसको head को lateral flexion कराना है and then traction in this and this. So in this webinar you have to learn the thrust barely without practicing over the patient. So पहले आप cushion लेके thrust practice कीजिए. What is high velocity? What is doing with the
shoulder and what is actually body dropping. The technique is body dropping, लेकिन आपको difference पता करना है. And then the rotational thrust and जैसे हम MCP engage करके ट्रैक्शन वर्टिब्रा फेसल जॉइंट को ट्रैक्शन देके थ्रस्ट करते हैं. तो बेसिकली आप पहले रोटेशनल लर्न करो सर्वाइकल के लिए एंड दिस थिंग. ओके, विल ट्राई टू आस्क मेडोनिस टू अरेंज वन मोर कि ये आप सीख लो, ये आप प्रैक्टिस कर लो. अक्षिता को आप जब बोलोगे आई ट्राई टू टीच यू मोर टेक्निक्स. ओके, सो हमने ये लर्न कर लिया. मूविंग ऑन टू द टेक्निक्स, I think, one question is like there are many red flags and all, you know, when to do, when not to do. Ankylosing में नहीं करना है. Hyper mobile joints, especially with the females, and those pregnancy के बाद when they become hypermobile, ऐसे सब conditions में नहीं करना है. When the joint is fused, तो बहुत सारे ऐसे रेड फ्लैग्स हैं जिसमें नहीं करना है. वर्टिब्रल आर्टरी इनसफिशिएंसी है तो बिल्कुल नहीं छूना है पेशेंट को, नेक तो छूना ही नहीं है. ऑलराइट, प्लीज रीड अबाउट दिस. वर्टिब्रल आर्टरी इनसफिशिएंसी में बिल्कुल नहीं करना है. देयर इज अ पर्टिकुलर टेस्ट जिसमें हम उनको एक्सटेंशन में ले जाके निस्टैग्मस चेक करते हैं एंड देन रोटेशन में. तो वर्टिब्रल आर्टरी की इनसफिशिएंसी है तो इट मे कॉज स्ट्रोक और समथिंग. आप प्लीज बी केयरफुल. नेक क्रैक करने से पहले प्लीज बी केयरफुल, एंड दैट्स व्हाई आई एम नॉट टीचिंग एनी नेक का टेक्निक. ठीक है, मूविंग ऑन. टेक्निक, आई नीड माय मॉडल, प्लीज मॉडल. या देयर इज वन मोर जनरलाइज्ड थिंग कि first we should do soft tissue work or the mobilization or this thrust. So the thing is, personally I work on the muscle first. अगर कोई कॉल करके मैडम चायरो करते हैं क्या बोलते हैं तो आई से आ जाओ. बट हाँ, इफ दे डोंट प्रेफर डूइंग फिजियोथेरेपी, क्योंकि फिजियोथेरेपी के साथ बहुत उनका अगर कोई वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा होगा, तो फिजियोथेरेपी नहीं करना है, सिर्फ चायरो ही करना है बोलते हैं. तो I don't spend too much time doing MFR and all. मेरी सिटी, I belong to Raipur where I'm working, where I'm based, रायपुर छत्तीसगढ़. यहाँ पे तो सब YouTube देख के चायरो ही फोन करते हैं. So तो अगर वो फिजियोथेरेपी नहीं करा रहे हैं तो भी I still try to work on their muscles, surrounding muscles before going for cracking. So if they are convinced for the physiotherapy, I do some relaxation technique. Whatever you do in physiotherapy, you do. Or else these days I use a Theragun. This is my original Theragun, the big one. So I do couple of times मैं हमको ये whole body या whole back में I do this relaxation thing. इतने में patient फेक भी आ जाता है and they surrender and their muscles are relaxed. Okay, after doing this, what I do is by rule सबसे पहले जो प्रोटोकॉल में रहता है लेग लेंथ चेक करना, जो हम विजुअल बॉडी रीडिंग किए हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट एंड फिर डायनामिकली उनको फंक्शनल करा के देखे, वॉक वॉक करके और दोस्त ने, एंड देन PSIS देखेंगे. एंड देन व्हाट वी सी इज देयर लेग लेंथ, जो मैंने PI और AS बताया. एंड देन personally I move to this area because the whole generation is of hunchback, you know, hyperkyphotic back. तो सबसे पहले मैं ये करती हूँ. People do pelvis, I prefer doing this क्योंकि उसके बाद patient, you know, completely surrenders to yourself. So she is a kid. I'm not going to crack. Sometimes I crack her, मस्ती में, but with you, I'm not going to crack her. I'll just tell you the facet. You know, thoracic में facet joint. You know, facet joint एक vertebra और दूसरा vertebra के दोनों side जो adjacent आपके
जॉइंट बनाते हैं, एक तो वर्टिब्रल बॉडी है और उसके दोनों साइड जो स्पाइनस ट्रांसवर्स प्रोसेस के, तो फेसेट के ओरिएंटेशन अलग अलग होते हैं. प्लीज द फर्स्ट थिंग यू डू आफ्टर फिनिशिंग दिस वेबिनार इज फेसेट जॉइंट का ओरिएंटेशन, क्योंकि हमारा फोर्स आई मीन हमारा वेक्टर विल बी इन द सेम लाइन. सो आई डू सबसे पहले थोरैसिक का. यहाँ पे आप सबसे नीचे वाला फ्लोटिंग रिब चेक कीजिए और फ्लोटिंग रिब के साथ साथ जाइए टू द वर्टिब्रा एंड आई स्टार्ट फ्रॉम D12. So don't be on the ribs. There are high chances that ribs के fracture होने के, ठीक है. And I'm on spinous process. I try this is not my regular couch. I have high-low couch in my clinic. This is little high for me. So just for demonstration purpose, I'm over here, and always be over the segment you're working with. And then what you need to do, compose yourself. आप अपना back relax कर लो, and यहाँ पे pressure दे लो, body weight दे लो, patient को relax होने का command दो, engage the barrier and ask him to breathe and breathe out and synchronize. The therapist should synchronize अपना breathing with the this is what I practice, अपना breathing with the patient's breathing. तो what will happen, एक बार वो breathing किया, जैसे ही ब्रीथ आउट किया, ये हमने ब्रीथ इन किया, ब्रीथ आउट किया, ब्रीथ इन किया, ब्रीथ आउट किया, फिर बॉडी वेट ड्रॉप करना शुरू करो, इंगेज द बैरियर एंड गिव द थ्रस्ट. ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट. Could you listen the sound? Lot of cracking was there, but could you listen? It was there. Okay. So the thing is, I'm not teaching you to make the sound, ठीक है? But लोगों की psychology है. So first, जब हम lower thoracic में है, तो orientation is like this. And while going up, especially T6 के पास आते आते, you be over. पहले आप ऐसे हैं, पहले आप ऐसे हैं, फिर ऐसे, और फिर ऊपर आते थे ऐसे. So my hands are like this, 60 degree, 45 degree, 90 degree, you know, ऐसे अलग अलग फेसेट के ओरिएंटेशंस के साथ में the vector has to go. जो फोर्स का वेक्टर है, it should go. Alright. So this was for the thoracic vertebra. Please be very careful, especially with the middle-aged females. बहुत osteophytes होते हैं. Or the male. I had a patient, 66-year-old retired patient, जिसको पूरी लाइफ में यही नहीं पता था कि he is ankylosing spondylitis का patient. He had a very bad, completely fused joints, और उसको पता ही नहीं था. After retirement, he went for a holiday with his family, और स्कीइंग करते हुए कहीं पे वो गिरे आइस में ही, स्कीइंग करते हुए, and he got a catch हुआ उनको, और तब he realized, जब वो डॉक्टर के पास गए pelvis पेन को, lumbar पेन को लेके, then he realized कि उनको तो लाइफ लॉन्ग ankylosing था. तो प्लीज don't rely on the patient, use your knowledge and skill, ठीक है. So आप floating ribs में नहीं करेंगे, और vertebral body मतलब you say transverse process में ही ये आपने किया, and then grab the ribs. अब ribs में अंदर की तरफ, grab the ribs में अंदर की तरफ pressure देंगे. This is for ribs, but be very gentle. Ribs fracture होने के बहुत chances होते हैं. And पहले तो आप चेक कीजिए कि पेशेंट रिलैक्स है कि नहीं. ब्रीथ इन के बाद ब्रीथ आउट में वो कंप्लीटली ब्रीथ आउट कर रहा है कि ब्रीथ इन करके होल्ड कर ले रहा है. फिर वो अप से ओरिएंटेशंस के साथ उसके रिब्स को भी क्रैक कर सकते हैं, ठीक है. वन थिंग आई फॉरगॉट टू check you the freedom of vertebra, the mobility of vertebra. I usually practice this very much, very common. Like मैं स्पाइनस प्रोसेस में हाथ रख के उसका स्प्रिंगीनेस जरूर से चेक करती हूँ.
it should go and come forward. Elasticity होनी चाहिए सारे. If the vertebra is good, there is no dysfunction, there is no blocking, तो springiness जरूर से check कीजिए. With too much of pressure नहीं, एक gentle pressure के साथ you'll get an idea कि कहाँ वो stuck up है, कहाँ springiness नहीं है, कहाँ blockage है. All right. So हमने कर लिया vertebra and then ribs. And coming to the pelvis, I think the time is over. I'll take another 5 minutes. I wish I could finish it on time, but anyways, be with me for another 5 minutes. Pelvis के लिए what I want to say, मैं कोई specific technique नहीं बताऊंगी. You just learn the technique, and this is very non-specific. You can do on anybody. Reach out to the pelvis. This is distraction of pelvis. You know, fit your both the palmar aspect on the pelvis, crest पे आपने रखा और do the distraction. ठीक है, ये मुझे एक्चुअली मेरे सेटअप में more comfortable. ये आपने distraction के लिए कर दिया. जब आप हाथ रखेंगे तभी आपको पता चल जाएगा कौन सा ऊपर नीचे है, कहाँ पे ज्यादा करना है. ठीक है, तो you do the distraction. ये आपने general distraction कर लिया. After this, if patient, I'm not talking about disc bulge and all, it's very specific and expertise thing. L5 enterolisthesis अगर है तो what you will do? How you will safeguard yourself by doing this thing? तो ये कर लिया आपने and distraction कर लिया pelvis का. इतने traction में ही patient will start feeling good. ठीक है, बीच बीच में उनको वॉक कराइए. एवरी टेक्निक के बाद उनको मोबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. उनको वॉक करने बोलिए, 2 राउंड वॉक करके आने बोलिए. एंड देन आफ्टर दिस इट्स L5 enterolisthesis. Now we turn around. Straight आ जाओ. Yeah. Be straight. Centralize yourself. Yeah, and bend your knees, bring it till your chest, bring it, relax, leave it, relax. And guys, I don't have much space here. इसको आप relax करेंगे, breathe in करके, breathe out में you have to thrust, you have to thrust like this, so it will go more of L5. और अगर listhesis है, then also you can do this thrust. L5 का listhesis है तो this is the thrust. ठीक है, I'm not in proper position. My hand will be straight, elbow will be straight. I don't have much space here. L4 करना है तो इसका ये जो एंगल है, ये एंगल चेंज होगी, ये हो जाएगा L4, L3. तो ये we can change the segment with the orientation of ये knee का chest का जो एंगल है, इसको चेंज करके. Then coming to nutation and counter nutation. This is easy and you can practice. You need to turn the other side, this side. Yes. We are again live. We are about to wind up the things. Okay, I was on sacrum. All good, Akshita? Yes, ma'am. Okay. So you can just wait for 2 seconds so that let everyone join the webinar. Okay, till then I'll take the position. Yeah. Yes, ma'am. Relax, come forward. Come forward. No, don't turn, just come forward. Shift. Yeah, relax. Just relax. Usually the affected side, there are a lot of calculation when to treat lumbar first or sacrum first, and the combination PI with EX and IN, in flare and out flare, pelvis and all. I'm not going to talk about that. So keep the PI side up, the short leg side up, and take this position. The leg, one leg, up leg is bent. Shall we start, Akshita? Yes, ma'am. You can. Yeah. Don't help me. Relax. The thoracic in complete rotation and
take this position. So what we're going to do, the landmark here is S2. Above S2 will do the thrust. इसमें भी don't do with the your shoulder. It's really going to hurt you. Cross your body. आप patient की body, here I have really less space. Patient की body के over आप ऐसे cross करेंगे. You are not here. You have crossed the body of the patient. And then S2 के ऊपर, S2 के ऊपर you'll treat and give a thrust. Drop your body. This is for counter nutrition. जो sacrum is like this, sacrum पीछे आ गया है. तो S2 के ऊपर जब आप बेस को ऐसे पुश करेंगे तो sacrum न्यूट्रिशन में जाएगा. ऑलराइट, सो ये आपका सेक्रम है. S2 के ऊपर इसको करेंगे, फ्लैट बैक के लिए है अगर तो. क्रॉस योर बॉडी, आज द पेशेंट टू ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट कपल ऑफ टाइम्स, और जैसे ही वो लास्ट में ब्रीथ आउट करे, एंगेज द बैरियर एंड डू द ड्रॉप योर बॉडी टू द थ्रस्ट. अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू. सेक्रम ऐसे है, अगर ये काउंटर न्यूट्रिशन में लॉक है, बेस पोस्टीरियर हो गया है, तो S2 के ऊपर बेस के पास आएंगे और अपना हैंड रखेंगे लाइक दिस एंड कम अक्रॉस द बॉडी एंड थ्रस्ट. दिस इज फॉर काउंटर न्यूट्रिशन. वही चीज अगर देयर इज हाइपरलॉर्डोसिस ऑफ द लंबर स्पाइन, तब आप क्या करेंगे? It has gone into nutrition, the sacrum has gone into nutrition, तो S2 के नीचे आएंगे, S2 के नीचे, एंड उसको ऐसे लाने की कोशिश करनी है. सो क्रॉस योर बॉडी एंड ब्रीथ आउट के साथ ड्रॉप योर बॉडी वेट, ड्रॉप योर बॉडी वेट. डोंट थ्रस्ट विद द शोल्डर, ड्रॉप योर बॉडी वेट. सो दिस वाज, we are done. This was for the sacrum. So I taught you the palpation, the reading visually, and then palpation and walking के साथ Gillette test like part, and thoracic manipulation and pelvis का distraction and sacrum. So I think we are done for the day. What I want to practice you for another few days is practicing your thrust with the cushion. So this is your model for next few days. If you are a beginner, please practice it with the cushion. ये and dropping the body weight, high velocity, and then engaging in low amplitude. So this is the thing. Get up. There are, we just can't imagine the benefits of manipulation. It's not only the musculoskeletal thing. We are done with the techniques. It's not the musculoskeletal thing. Manipulation is always like सबको लगता है क्रैक and joint subluxation ठीक हो गया, joint अपने place में आ गया और but I tell you there are so many benefits, especially when you doing it on the spine. Because spinal nerves है, use your knowledge and common sense. Spinal nerves है, all your visceras, आपके liver को, gastrum को, coliac, part of all intestine, ascending, descending. Just go and revise कि कौन से पार्ट ऑफ ड्यूडेनम को कौन सा स्पाइनल नर्व कर रहा है. आप पेशेंट से पूछेंगे कॉन्स्टिपेशन है क्या, थोड़ा सा विसरल पाल्पेशन करके देखिए, या उनको लगता है कि यहाँ पे उनको चेस्ट के जस्ट नीचे एसिडिटी या गैस या बहुत टाइट लगता है, तो उनको गैस्ट्रम में अगर कुछ है, तो आप डायफ्राम रिलीज के साथ साथ यू कैन क्रैक समवेयर बिटवीन T6 to T9, जहाँ पे दे हैव दिस स्पाइनल नर्व आके आपके गैस्ट्रम को. थैंक यू. सो वी ऑल शुड बी थैंक यू टू द मॉडल. सो तो जब हम वी कैन मेक पेशेंट रियलाइज कि आप आज जो आप कल मैंने आपका मिड थोरेसिक करेक्शन किया, उससे आपका डाइजेशन भी थोड़ा बेटर हुआ होगा, आज आपको हल्का लगा होगा, तो दिल से यस यू हैव टू मेक देम रियलाइज, क्योंकि वही सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक कनेक्शंस, इनर्वेशंस वहीं से आ रहे हैं, एंड द होल एब्डोमेन थिंग यू कैन वर्क फ्रॉम हियर आल्सो, नॉट फुली बट पार्शियली यू कैन रेक्टिफाई सो मेनी थिंग्स. तो गो एंड रिवाइज कि
कौन सा कॉलिक या स्प्लैंटिक नर्व है, कॉलिक प्लेक्सिस है, कौन सा नर्व कौन से ऑर्गन या कौन से पार्ट को इट्स सप्लाइंग, पल्विक फ्लोर को कौन सप्लाई कर रहा है, जिस भी प्रॉब्लम से आए हैं ना उसका एक इनर्वेशन स्पाइन में, क्योंकि कायरोप्रैक्टिक में दे से स्पाइन इज द सेंटर, स्पाइन इज द सेंटर ऑफ द हेल्थ। पूरे आपकी बॉडी में जो भी हो रहा है, इवन नी में कुछ हो रहा है तो वो नी को अलाइनमेंट के साथ साथ नी का जो भी आपका L4 L5 जो भी आपके नी के अराउंड इनोवेशंस है, दे वर्क ऑन दैट आल्सो। सो व्हाट आई वांट टू डू next is to thank the medalist, and before that yeah, I'm forgetting one thing. Please ask your patient to stay hydrated. The day when you have cracked them, please ask them to have more than normal, I mean up to 3 to 4 liters of water, irrespective of the age and height and health. उनको at least 3 liters of water तो जरूर बोलिए, ठीक है। हाइड्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो गैसेस रिलीज हुए हैं, जो टॉक्सिक्स वहां पे रिलीज हुए हैं, इट नीड्स टू फ्लश आउट। तो आप हाइड्रेशन एक जरूर उनको बोलिए। एंड मोबिलिटी, वापस कोई स्पैज़म नहीं आए, डिफेंसिव मैकेनिज्म नहीं ऑन हो, कोई इनहिबिटरी रिस्पॉन्सेज नहीं आए, इसके लिए आज देम कि आज मैंने क्रैक किया है एटलीस्ट 3000 4000 5000 स्टेप। देन दे विल से कि मैम हम दिन में 5000 स्टेप्स चलते हैं, तो यू से नो, नॉट इन होल डे, एट ए टाइम एटलीस्ट 3 to 4000 5000 स्टेप्स आप चलिए। जिस भी दिन आपके कायरोप्रैक्टिक सेशंस हो रहे हैं, you have to stay hydrated and you have to keep lot of mobility, cycling या walking preferably। आप ये जरूर कीजिए, कितना भी पेन है ब्रेक में वॉक करना है, ब्रेक में कीजिए कि 20 मिनट्स वॉक किए, फिर उनको झुंझुनी आ गई, नमनेस आ गया, ऑन दिस कंप्लेंट्स आज देम टू सिट, बट अगेन pick up walking. So these are the general things. I hope it was helpful and informative to you. I tried to deliver the basic of it, and I really मतलब no offense to my gurus, मैं टेक्निक सिखाने का नहीं सोची थी टुडे, एंड ओनली आई डिसाइडेड कि स्टूडेंट्स हैं, टेक्निक्स भी थोड़ा सिखाना पड़ेगा, दे आर मोर keen to learn technique, but I wanted to give an idea कि how you should carry yourself as a physio and a chiro, and what are the basics of chiro, when to learn, when to do the musculoskeletal thing, I mean muscle release, soft tissue release, and then chiro and all those things, what is cavitation and all such things, and few techniques. So I hope it was helpful. Over to you, Akshita. Thank you so much, ma'am, for your precious time. If you have any question related to anything, you can ask her now. I have few questions from the first one, ma'am. When can a physiotherapist do a chiropractic course in Mumbai? See, I have learned, honestly, my guru is Narki sir. Everybody knows him. So I think इंडिया में इस चीज को इंट्रोड्यूस करने वाले और आगे बढ़ाने वाले डॉक्टर नारकेश अनुगम सर ही हैं। तो बेसिक, एडवांस, स्पाइनल, पेरिफेरल, whatever, you follow him, you'll get to know one is the workshop। और otherwise India is a big market, बहुत सारे फिरंगीज आ रहे हैं which are too expensive and very limited techniques they teach। So you can update yourself anytime। Mumbai का I don't know, I'm not a chiropractor, instructor, I'm not never going to teach you chiropractic, not in near future, I'm not going to teach। So follow whatever the platforms you are, और वहाँ पे आप देखिए कहाँ पे कौन से courses हो रहे हैं। Okay, ma'am. One question. Palpation should be done softly or little bit hard? See, initially physios tend to do it very hardly, पर चलो आप शुरू तो करो। Since I'm doing, I've done osteopathy also, तो I have learned this कि हम तो few millimeters के ऊपर से ही warmth देख के बता देते हैं कि कहाँ पे something is dysfunctional, कहाँ पे something is not right, तो वो warmth से ही बता देते हैं। तो even आप 5 days भी प्रैक्टिस करेंगे ना कि कहाँ की एनर्जी आपको कम ज्यादा लग रही है, there is too much of cold or there is too much of some activity going on or warmth is there,
बट विथ यू आप थोड़ा फॉर्मली कर लो. when you will expertise with practice you can do very मतलब feather उससे भी बता सकते हो कि spine 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 something is missing और spine 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 something is up. तो या shifted rotated सब चीजें आप बता सकते हो. Okay, ma'am. Next question. Does that popping sound really matters? नहीं, there are different school of thoughts. It's a gimmick to the therapist and to the patients more. Patients वो sound से बड़ा relax होते हैं, but not necessarily. अगर आपका correction हुआ है तो not necessarily कि sound ही आएगा. Sometimes patient well hydrated होते हैं, उनकी mobility अच्छी होती है, बट कोई वर्टिब्रा फंसा ही हुआ है तो आप कर सकते हो उसको सेट. नॉट नेसेसरली कि साउंड आए, बट मोस्टली साउंड आता ही है क्योंकि पेशेंट बहुत इनएक्टिव पेशेंट्स आते हैं आजकल, या मेरी बहुत वेट ट्रेनिंग करके बहुत जाम्ड पेशेंट आते हैं. बट इट्स नॉट नेसेसरी, नो इट्स नॉट मैंडेटरी कि साउंड आएगा ही तभी वो करेक्शन हुआ है. करेक्शन हो जाता है विदाउट द साउंड. Okay, ma'am. Duration of giving this? Duration, I didn't get the question. Duration is like chiropractic is not every day. कई सारे स्कूल में बोलते हैं कि आपने एक बार क्रैक किया 20 मिनट्स बाद फिर क्रैक कर सकते हो. आई डोंट बिलीव इन दैट, क्योंकि मेरे पेशेंट्स को मैं तभी से हाइड्रेशन और तभी से मोबिलिटी बोल देती हूँ तो वापस स्पैज्म होने के उस कैप्सूल को वापस कंस्ट्रिक्ट होने में इट टेक्स टाइम. तो ड्यूरेशन इज लाइक इफ आई एम डूइंग, आई यूजुअली कॉल माई पेशेंट्स बहुत सीवियरली इल है तो बिकॉज आई कंबाइन, मैं तो खिचड़ी बनाती हूँ ना, आई कंबाइन विद ऑस्टियो कायरो एंड फिजियो. तो व्हाट आई डू, मैं उनको couple of session in a week, like मंडे है तो नेक्स्ट फ्राइडे सैटरडे कायरो सेक्शन कायरो के सेशंस रहेंगे. मीनवाइल उनकी बाकी चीजें चलती रहती है, फिजियो है वो है, वो सब मीनवाइल चलते रहता है. तो मैक्सिमम आई थिंक यू कैन टेक 2 to 3 सेशंस कायरो का, इवन 2 सेशंस आप लो, उसके बाद उसको टेपर ऑन कर दो. अगर पेशेंट इज शोइंग बेटर रिजल्ट्स तो टेपर ऑन कर दो वंस अ वीक. ऐसे करके यू कैन लिंगर ऑन टू 3 months ऑल्सो, अगर आप सेशंस नंबर ऑफ सेशंस बहुत कम कर देंगे तो. सो दिस इज इट. Ma'am, exactly which part of hand delivers the high velocity? कम अगेन. Which part of the hand delivers the high velocity thrust? सी मोस्टली इट्स नॉट हैंड डियर, इसलिए मैं बोल रही हूँ एक बार तो आप क्वेश्चन के साथ रॉन्ग और राइट प्रैक्टिस करो. इट्स योर बॉडी विच यू ड्रॉ. मैं भी अभी तक इतनी एक्सपर्टाइज नहीं हुई हूँ. समटाइम्स आई ट्रस्ट विथ माई शोल्डर्स ऑल्सो, but I only know what I have gone through in this last 1.5 years with my shoulder. So don't repeat this mistake. कई लोग को बैक इंजरी बहुत होती है फिजियोथेरेपिस्ट को कार्य करते करते. So it's not my hand and shoulder, or it's not my hand and shoulder. Guys, please practice it with cushion. It's your body weight. It's your body weight. It's your body weight. Okay. Even if you lumbar में है, आप अगर लंबार में हैं तो भी ये ऐसे लिए एंड अक्रॉस द पेशेंट आप ऐसे जाएंगे और हैंड से शोल्डर से नहीं करेंगे. यू नीड टू ग्रैब एंड देन लास्ट एंड रेंज तक जाएंगे, बैरियर को एंगेज करेंगे एंड देन ड्रॉप द बॉडी वेट. ड्रॉप द बॉडी वेट. वेक्टर का ध्यान रखते हुए यू हैव टू ड्रॉप द बॉडी वेट. इट्स नॉट विथ योर हैंड और शोल्डर. बहुत कम जगह सर्वाइकल एंड ऑल में it's not body weight. I think some network issue. Everything is right. Yeah. So this is it. It's body weight, not your shoulders or heads. Other than cervical and all. All right. So next question. Is there any more questions? There are more questions, but it's network issue. Is there any age limit? Your voice is
not clear. I think I have some network issues. Come again. Chiropractor focus primarily on the joints and spine. Take the next webinar. Next webinar. First you practice. Send me on messenger कि आपने क्वेश्चन के साथ कितना प्रैक्टिस किया है. And then I'll take the next webinar. I have to prepare for that. Any more question? I think I was chiropractic focus primarily on the joints and spine and osteopathy for osteopathy में chiropractic is a part. Osteopathy में they say full body को balance करना, rhythm को, हर एक body part का एक rhythm होता है अलग अलग, उसको set करना, that is osteopathy. Inner healing को promote करना is osteopathy. What else? Asha, one more thing. Somebody has write this word pretension is very, very, very important term. Thank you, Shah Vandit. This term pretension. Okay. Don't come back. Don't bounce back, guys. When you giving this, it really needs lot of practice. ये आपने barrier engage किया और जैसे patient breathe in करता है और फिर आप breathe out करने की तैयारी में हो, तो what you do, engage the barrier, breathe in and breathe out. Again ये जो amplitude है, ये जो amplitude है, ये बहुत बड़ा amplitude हो जाता है. So be there, okay? Freeze there. ये आपने breathe in किया, breathe out, engage the barrier, again breathe in and breathe out. So वापस आके जाना is a big amplitude and this is low amplitude. We have to perform it in low amplitude. So pre-tension को वहीं पे ही maintain करना है. Very good question. Yeah, thank you. Next. Should we ask patient to do a strengthening exercise after the session at home? यार आपका patient acute है, chronic है, क्या stage में है? It all depends. मैं ankle sprain के patient को proximal ankle sprain का अगर patient है तो मैं proximal stage में भी. So depends. आपका patient अगर सीधे strengthening नहीं, first foam roller releases stretching करना है, उसके बाद strengthening में डालना है. The protocol is very different. For crack करते ही आप strengthening में नहीं भेज सकते. You need to assess कि what needs to be released and what needs to be strengthened. Okay. My next webinar is on body reading. I think it will help you to expand your vision. So you can follow my page. आप नीतू वर्मा से सर्च करना, by what name it is there, I don't know. Any more question? Any criteria for giving high velocity thrust? मैं सच में guys, I really wanted to take this on red flags, indications and contraindications of chiro, but too much of theory में audience आप लोग सब बोर हो जाते हैं, इसलिए मैंने नहीं लिया. There is whole lot of thing of red flags and you need to be very careful, especially with the cervical and the ribs. Please guys be very careful while performing the velocity. आप वैसे वाले रोज क्रैक साउंड करते हुए स्टोरीज डालने के एडिक्ट मत हो जाना. Be very choosy when you doing high velocity. Okay, don't be a bone setter or cracker. Please don't be a cracker. All right. In OA cases, it is effective. See, with osteoarthritis, it is a contraindication actually. Osteoarthritis, but we do. मैं कर लेती हूँ. All my colleagues they do in osteoarthritis. There are chances of fracture. तो vertebra में you need to be very gentle. Still you can do. बहुत osteoporotic नहीं है तो you can do. Too much of osteoporosis या osteophytes है तो you have to avoid. You have to really check with that specific case. But osteoarthritis में OA knee में तो we do and wonderful results क्योंकि muscular strength के जाने के कारण misalign होता ही है. But osteoporosis के case में you need to be very careful. Any age limit? Age limit
People crack the inborn, the infants also. It's just about the practice. People crack 70 plus के patients also, just the practice. तो पहले आप क्वेश्चन को तो ट्रीट कीजिए, क्वेश्चन को तो डिफॉर्म और वापस फॉर्म में लाइए. विल टॉक अबाउट द एज लिमिट ऑल्सो, बट या थ्योरेटिकली देर इज एज लिमिट, क्योंकि बच्चे थोड़े हाइपर मोबाइल जॉइंट्स भी होते हैं बच्चों के, एंड इट्स नॉट एडवाइजेबल इन आर सिनेरियो. एंड एल्डरलीज में भी बहुत ऑस्टियोपोरिटिक होते हैं एंड ऑल दोस थिंग. So people avoid, but yeah, there are few experts who does. What is minimum, maximum, Shwetu? Ma'am, exactly which part of the hand delivers? I think I have answered. Difference between chiropractic and osteopathy. This is too long. My throat is choking now, drying. Difference between chiropractic and osteopathy is, again, chiropractic. For them, the spine is the center of the health, which is true. Spine is the center of the health, and they see everything in terms of subluxation, misalignment, aligning it back, working on the joint, musculoskeletal thing पे. Osteopathy में it's vague. Osteopathy में manipulation is a part, but osteopathy में we try to promote the inner healing. आप विसरल में, क्रेनियल पे काम करते हो, और बॉडी की जो रिदम होती है, हर एक ऑर्गन्स की अपनी एक रिदम होती है, तो वी ट्राई टू सेट बैक द रिदम विथ सम जेंटल टेक्निक्स. दैट इज ऑस्टियोपैथी. मोर क्वेश्चंस और आर वी डन? I think my host isn't there, so we need to wind up. You can anytime leave your questions with me. All right, I'm less Insta friendly, but ठीक है, this way I'll become Insta friendly. Familiar. If any patient complains stiffness in neck early morning, does it suggest that the facet joints? हाँ, और facet joints के restrictions, उसके around muscles के restrictions से ही तो arthritis शुरू होता है. Facet joints आप बहुत clean, mobile, glycery, lubricated रखेंगे ना, तो osteophytes नहीं बनेंगे, irregular facet joints नहीं होंगे, और arthritis, there will be very less chance of arthritis. Okay. हाँ, रॉन्ग पोस्चर में वाइल स्लीपिंग लॉक हो सकते हैं. कई बार होता है ना, पेशेंट आते हैं कि सुबह हम ऐसे ही उठे, बिल्कुल हिला नहीं सकते, इट्स वेरी वेरी पेनफुल. तो वही है, बट यू कैन एक्यूट स्टेज में एकदम से आप नेक क्रैक नहीं कर सकते. वर्क ऑन द मसल फर्स्ट. दैट्स माय स्टाइल. All right, I think we are done, and I'm missing my host, the Medonist. So we really need to wind this up. I'm half an hour running late. Okay, guys. So please drop your queries. I would love to answer. Thank you. You can follow me for next webinar. Yes, Namrata Mehta. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. You all are good learner. Thank you.